नमस्कार मोर प्रियर ओडिशावासी माने विश यू हैप्पी गणेश चतुर्थी। मु वेबसाइट आपन को स्वागत जनाऊँगी आपणकर प्रिय चैनल बीबी इंडिया जार नाम होची विकास और वृद्धिर भारत एवं नयना डिजिटल स्कूल को सांग माने आमे लेसन 8 रे आमे जानिथिले एट्रिब्यूट कोन एचटीएमएल एट्रिब्यूट कहा कुआ जाय। एबे आमे लेसन 9 रे जानिबा HTML doctype ऊपर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द doctype doctype रो कोन आवश्यकता अछि ता ऊपर आमे जानिबा। आमे गोटे प्रोग्राम लिखिबा को हेले आमे स्टार्टिंग रे doctype लिखिताउ doctype कोन पय लिखा जाय व्हाट इज doctype ता हमें ए लेसन रे पढिबा। एठी देखंतु लिखा जायछि doctype HTML all HTML documents must start with doctype declaration in HTML5 version। आमे जो प्रोग्राम आमे लिखुछे दैट इज HTML5 वर्जन। HTML5 वर्जन रे doctype डिक्लेरेशन रहउछि। doctype दैट मींस डॉक्यूमेंट टाइप। प्रोग्राम लिखला बेलु एटा फास्ट रे लिखा जाय doctype HTML doctype करके एटा फास्ट रे लिखा जाय। So declaration is not an HTML tag, that is not a HTML tag, it is an information to the browser about the document type to expect। मु जोटा आपन फर्स्ट कहतली जे एटा होची गोटे डॉक्यूमेंट टाइप सेटा एठी लिखा जायछि इट इज एन इन्फॉर्मेशन टू द ब्राउजर। एटा जस्ट गिव इन्फॉर्मेशन टू द ब्राउजर अबाउट व्हाट टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट इज दैट सेटा एठी लिखा जायछि। एटा हमर सिंपली लिखा जाय देखो हम आपन एग्जांपल भी एठी लिखि दैछि एमिति के लिखा जाय doctype HTML एमिति लिखि गई HTML5 रे हमें एमिति लिखि पाउ स्टार्टिंग रे। इन HTML5 द doctype डिक्लेरेशन इज वेरी सिंपल। ये सिंपल है पूरा सिंपल अच्छे किंतु आमे जदि देखिबा ओल्ड वर्जन रे सेठी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिला। आपन को देखौची इन ओल्डर डॉक्यूमेंट HTML4 और XHTML आमे जो पुराना यूज करथले HTML4 और XHTML रे द डिक्लेरेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज़ द डिक्लेरेशन मस्ट रेफर टू द DTD दैट इज डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। आपन एठी देखंतु HTML4.01 रे doctype डिक्लेरेशन केते बड़ करके हम लिखुतले doctype HTML पब्लिक इनके स्लैश 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 करके एमते लिखुतले। तो XHTML रे भी 1.1 रे भी एमते बड़ करके लिखा जाउतला। तो ताकू मॉडिफाई कराई कि HTML5 वर्जन रे हम लिखि ओछु एई पार्टटा doctype HTML। एटा हमर प्रोग्राम रो हेडिंग रहइबो जोटा कि रिप्रेजेंट करइबो व्हाट टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट इज दिस दैट इज आवर HTML डॉक्यूमेंट। सो इट इज written as document type doctype HTML। एठी संग माने देखंतु the doctype declaration is not a case sensitive, that means why it is called a case sensitive। एठी देखंतु आपण doctype आपण चाहिले एमिति भी लिखि परिबे आपण चाहिले कैपिटल स्मॉल करके भी लिखि परिबे या पय आपण को किछि भी प्रॉब्लम नै से पूरा माने ताको एक्सेस भी करि परिबो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो एमिति भी आपण लिखि परिबे so that it is written as doctype declaration is not a case sensitive। lesson 10 रे हमें सिखिबा HTML tag कोन। HTML tag means HTML रे HTML tag कोन हमें जानिबा। हम जो HTML प्रोग्राम लिखुछु ता धरो HTML tag कोन तार आवश्यकता अछि सेटा कोन पय दरकार सेटा हमें lesson 10 रे हमें ताकू निहाती सिखिबा। संग माने जदि हमर वीडियो हमर पाठ पढा जदि आपन भलो लागुची प्लीज सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एंड शेयर करंतु। और जदि किसी न बुझी पारथुन प्लीज कमेंट करंतु और मेल करंतु और नले फोन भी करंतु हम फोन नंबर भी दिया जाइछि। तो जहाँ भी किसी प्रॉब्लम होचे आपण हमकु जणांतु। तो नेक्स्ट हमें लेसन 10 रे देखिबा HTML टैग कोन। तो थैंक यू वेरी मच।